Everyone, myself Dr. Gauravi Tirole, Assistant Professor in Index Department of Physiotherapy and Paramedical Sciences. I will be delivering a lecture of spinal cord. In it, we will see the structure and functions of spinal cord. So first of all, we will talk about the shape and size. So it is cylindrical in shape and it is 18 inches, that in adult male it is 45 centimeter, or in female it is 42 centimeters. And as we can see, it occupies the upper two-third of vertebral canal. So this is, it occupies the two-third level of vertebral canal. Now we will see the origin of spinal cord. So it is from the upper border of atlas vertebra to the lower border of first or second lumbar vertebra. So here if we assume that this is the atlas vertebra, and here it goes in L1, L2. It terminates in L1, L2. So it continues from pons, medulla oblongata, and this is cervical enlargement. From here brachial plexus arises, and this is lumbar enlargement. So here is another plexus. This is conus medullaris and filum terminal. Okay, so inferiorly it terminates as conus medullaris, and at third month of intrauterine life it occupies the whole canal, as we can see here. Third month of intrauterine. So the spinal cord terminates till the end of vertebral column, and at the time of birth it is still L3 vertebra, and in adults it is still L1 to L2. Now if we talk about the cervical spinal nerves, cervical enlargement, thoracic spinal nerves, posterior medial sulcus. So in this structure we will see about the basic spinal cord structures, that is gray matter and white matter, anterior median fissure, ventral root, spinal root, and as we have discussed, inferiorly it tapers off into conus medullaris. Now this is spinal cord, and here it is tapering as conus medullaris, and this is like horse tail, so this is called cauda equina. This is a Latin word. Now what are the coverings of spinal cord? So the innermost layer is pia mater, and the middle one is arachnoid, and the outermost layer is dura mater. So the spinal cord is protected by three coverings, that is the innermost is pia mater, then arachnoid, and then dura mater. So if we talk about the protecting layers of the spinal cord, so here are these three layers, and the next thing is, the first and important is vertebra, the protecting covering of spinal cord, that is vertebra, and then some fat tissues, as here you can see. Then comes the CSF, then pia mater, and then comes the spinal cord. So this is conus medullaris, this is filum terminal, this is cauda equina, and the outermost is dura mater. So here are the some terms
That conus medullaris refers to the terminal portion of the spinal cord. Phylum terminal means fibrous extension of the pia mater. Denticulate ligament we can see in the next slide, that is delicate shells of pia mater attach the spinal cord to the vertebra. Then comes spinal nerves, that is 31 pairs attached to the cord by pair roots. Then comes cervical and lumbar enlargement, and then chordae equina we have already discussed. So these are the denticulate ligaments that are the delicate shells of pia mater. So this here is denticulate ligament. Now comes the spinal nerves and cords. So here we have cervical nerves, that is we have 8 cervical nerves. Then thoracic nerves, we have 12 thoracic nerve. Lumbar, that is 5. Sacral nerves, that is 5. And coccygeal nerve. So if we talk about cervical nerves, so there are 7 cervical vertebra, but we have 8 cranial nerves. So why is this difference, that we have only 7 cervical vertebra and cranial nerves, cervical nerves are 8. So in this diagram it can be shown that one is arising from above the C1 vertebra and one is arising from below C7 vertebra. So here is 1 2 3 4 5 7 8. So that's why we have cervical nerves, that is 8 pairs. Now what are gray matter and white matter? As you can see here, this is the white matter, and this one is the gray matter. So white matter is the most heavily myelinated axons, and the gray matter is mainly neuronal cell bodies. Now white matter, that it connects brain region to help with learning, attention and motor control. So white matter is associated mainly with this learning, attention and motor control. And gray matter, it process and transmit information, it controls movement, memory and emotion. So here is the basic difference of white matter and gray matter. So white matter is the paler tissue of the brain and gray matter जो होता है वो darker tissue of the brain, and this consists mainly of nerve fibers with their myelin sheath, और ग्रे मैटर में मेनली नर्व सेल बॉडीज़ होती है. अब वाइट मैटर में जैसे हमने बात कर ली, लार्ज नंबर ऑफ माइलिनेटेड एक्सॉन्स रहेंगे. ग्रे मैटर में फेवर माइलिनेटेड एक्सॉन्स रहेंगे. इसका लाइट कलर जो रहता है वाइट मैटर का, इट इज़ ड्यू टू लिपिड कंपोनेंट्स ऑफ माइलिन. एंड ग्रे मैटर का जो कलर रहता है, दैट इज़ ड्यू टू न्यूरोनल सेल बॉडीज़ एंड कैपिलरी ब्लड वेसल्स के कारण. नर्व सेल्स जो रहते हैं वो लॉन्ग एक्सॉन कंटेन करते हैं, और ग्रे मैटर में जो रहता है वो शॉर्ट एक्सॉन्स कंटेन करते हैं. नाउ वाइट मैटर जो है वो ऑकर होता है कॉर्टेक्स ऑफ द ब्रेन में, और ग्रे मैटर जो होता है आपका सरफेस में होता है. देन इट ऑक्यूपाइज 60% ऑफ द ब्रेन, दैट इज़ वाइट मैटर, एंड ग्रे मैटर ऑक्यूपाइज 40% ऑफ द ब्रेन. जो वाइट मैटर का हाईएस्ट डेवलपमेंट होता है वो 20s तक हो चुका होता है, और ग्रे मैटर का जो हाईएस्ट डेवलपमेंट होता है वो मिडिल एज ऑफ लाइफ तक होता है. वाइट मैटर क्या करता है, सेंसरी और मोटर इम्पल्सेस दोनों को ट्रांसमिट करता है. एंड ग्रे मैटर दैट टेक्स एंड सेंस इंफॉर्मेशन टू इफेक्टर ऑर्गन्स. Now white matter controls the involuntary functions, blood pressure, heart and body temperature, और भी दूसरे functions होते हैं. और grey matter जो है वो controls the sense of the body, जैसे सुनना, speech, memory, देखना and all. Now if we talk about the basic structure of spinal cord, so here we have
posterior median sulcus, and this is anterior white funiculus, this part. Then comes here anterior white commissure, and here it is posterior grey commissure. Then comes anterior grey commissure, this is lateral white funiculus, posterior white funiculus, posterior medium septum, posterior anteromediate sulcus, posterolateral sulcus, posterior grey horn, lateral grey horn, and all these structures in spinal cord. Now if we talk about the visceral motor neurons, which is this, the first one, this is visceral motor neuron, this yellow color. This carry the information from the central nervous system to internal organs, that is controlling involuntary functions like heart rate and digestion. So what is the main function of visceral motor organ? ये क्या करेगा, इन्फॉर्मेशन CNS से ले जाता है इंटरनल ऑर्गन्स में, जो कि मेनली क्या होता है, कंट्रोल करना होता है इनवॉलेंट्री फंक्शंस को. नाउ कम्स द विसरल सेंसरी न्यूरॉन, दैट इज़ दिस वन, green color. So it carries sensory information from internal organ back to CNS, such as signals about hunger or blood pressure, to monitor internal conditions and maintain hemostasis. यहाँ पर मोटर न्यूरॉन जो है वो इन्फॉर्मेशन CNS से इंटरनल ऑर्गन्स में ले जा रहा था, और विसरल सेंसरी न्यूरॉन्स जो है वो इंटरनल ऑर्गन से बैक टू CNS ले जा रहा है. बट इसके सिग्नल्स अलग होते हैं, जैसे ब्लड प्रेशर मेंटेन करना या हंगर मेंटेन करना या मॉनिटर करना. नाउ कम्स द सोमेटिक मोटर न्यूरॉन्स. सोमेटिक मोटर न्यूरॉन इज दिस, द थर्ड वन, that is red in color. So it sends signals from brain and spinal cord to skeletal muscles, initiating voluntary movements. तो ये क्या करता है, सिग्नल सेंड करता है फ्रॉम ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड टू स्केलेटल मसल्स, ताकि वो मूवमेंट इनिशिएट कर पाए. नाउ द फोर्थ वन इज सोमेटोसेंसरी न्यूरॉन्स, दैट इज़ इन ब्लू कलर. इट डिटेक्ट्स स्टिमुलाई फ्रॉम बॉडीज एक्सटर्नल एनवायरनमेंट एंड इंटरनल ऑर्गन्स एंड सेंस दैट इंफॉर्मेशन टू ब्रेन फॉर प्रोसेसिंग. बाहर के एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से स्टिमुलस लेता है और इंफॉर्मेशन सेंड करता है ब्रेन की तरफ, ताकि वो उन सिग्नल्स को पहचाने और प्रोसेस करें. ठीक है, सो दिस आर 4 मेन न्यूरॉन्स एंड दिस आर देयर फंक्शंस. दिस इज़ डॉर्सल रूट गैंग्लियन and this is dorsal root, this is ventral root, that is motor, and this is anterior horn, that is motor neurons. So these are the locations, mainly anterior horn. In anterior horn motor neurons are situated, and in posterior horn we have sensory neurons. Now if we talk about the nucleus, so we have different nucleus: posteromarginal nucleus, substantia gelatinosa, nucleus proprius. Then we have nucleus dorsalis, that is Clark's column. Then we have lateral, central and medial group of anterior gray column. Then we have anteromedial nucleus and anteromediolateral nucleus. Now if we talk about the nuclei and anterior gray column on horn, so we have the first one is medial group, this one. So we are talking about this medial group. So it is present throughout the entire extent of spinal cord and innervates the axial muscles of the body. So what happens here is, this does
Now we have lateral group that is present only in cervical and lumbar enlargements and supplies musculature of limbs. So now we have lateral group that is present only in cervical and lumbar enlargement. Okay, then comes lateral group के अंदर 3 न्यूक्लियस के ग्रुप आते हैं, एंटेरोलैटरल, पोस्टेरोलैटरल एंड पोस्ट पोस्टेरोलैटरल. एंटेरोलैटरल में क्या होता है, प्रॉक्सिमल मसल्स ऑफ लिम्ब होती है, जिसमें कि हम बात करते हैं शोल्डर एंड आर्म या ग्लूटियल रीजन एंड थाई में. पोस्टेरोलैटरल में हम बात कर रहे हैं फोर आर्म एंड लेग, एंड पोस्टेरोलैटरल में हम बात कर रहे हैं हैंड एंड फुट. और सेंट्रल ग्रुप जो होता है that is only in upper cervical segments such as phrenic nerve nucleus and nucleus of spinal root of accessory nerve. Now if we talk about the lateral horn nucleus, तो एंटेरोमीडियोलैटरल न्यूक्लियस जो है वो 2 सेगमेंट्स में देखने को मिलता है. तो फर्स्ट इज T1 to L2 सेगमेंट्स एंड S2 to S4 सेगमेंट्स. नाउ इफ वी टॉक अबाउट इंटरमीडियल न्यूक्लियस, तो ये मेनली इंटरन्यूशनल न्यूरोनल कॉलम होता है. नाउ इफ वी टॉक अबाउट द पोस्टीरियर ग्रे कॉलम, सो हियर आर 4 मेन nucleus we can see, that is posteromarginal nucleus. So it receives some incoming dorsal root fibers that is of sensory neurons. Now if we talk about substantia gelatinosa, so it acts as a relay sensation for pain and temperature fibers. So here जो sensations होता है पेन और टेम्परेचर का, वो ट्रांसमिट होता है. एंड इट्स एक्सॉन गिव राइज टू lateral spinothalamic tracts. Now if we talk about nucleus proprius, so it extends throughout the entire extent of cord and it lies subjacent to substantia gelatinosa. It is mainly concerned with sensory associative mechanism. And nucleus dorsalis, also known as thoracic nucleus, so it extends from C8 to L3 segments, and it is relay nuclear column for reflex or unconscious proprioceptive impulses to cerebellum, and its axon give rise to posterior spinocerebellar tract. So here we have substantia gelatinosa and nucleus dorsalis, जिसमें कि क्या होता है, substantia gelatinosa किसको स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट को यहाँ से लेकर जाता है, एंड न्यूक्लियस डोर्सालिस जो है वो पोस्टीरियर स्पाइनोसेरेबुलर ट्रैक्ट्स को लेकर जाता है. ठीक है, अब हम बात करते हैं फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर एंड थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन की. तो आपका जो फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन होता है वो होता है स्किन में जो रिसेप्टर्स होते हैं, एंड दे कैरी द इंफॉर्मेशन थ्रू नर्व एंड दे carry sensations from dorsal root, and it gives the information to substance that is its adjacent nucleus. तो यहाँ पे क्या हो गया, फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन आपका जा रहा है, फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन हो गया आपका स्किन से लेके स्पाइनल कॉर्ड के न्यूक्लियस तक, उसको हम बोलेंगे फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन. सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन आपका क्या होगा, आपके न्यूक्लियस से जो जिस ट्रैक्ट की तरफ वो जा रहा है उसके बाद वो जाता है थैलेमस तक. ये वाला जो पार्ट हो गया, यहाँ पर आपका जो रूट बन रहा है दैट इज़ ऑफ सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन. एंड फिर थैलेमस से जो कॉर्टेक्स या जिस भी सेगमेंट तक जा रहा है सेरिब्रल कॉर्टेक्स के, वो रूट आपका आ गया थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन. सो जब भी हम ट्रैक्स की बात करते हैं या कोई भी पाथवे होता है तो उसमें फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन आता है, सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन आता है और थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन आता है. तो फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन की जब बात होती है तो उसमें रहता है स्किन रिसेप्टर से लेके आपका स्पाइनल कॉर्ड के ग्रे मैटर तक, जहाँ पर भी
एडजेसेंट न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है। उसके बाद सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन कैरी करता है न्यूक्लियस से तो आपका थैलेमस तक, थैलेमस के भी वेंट्रोलैटरल पार्ट पे जहाँ पे भी वो ट्रांसमिट कर रहा है। फिर थर्ड ऑर्डर जो रहेगा वो जाएगा आपका थैलेमस से एडजेसेंट कॉर्टेक्स तक। So this is the basic first order, second order and third order neurons. Now if we talk about the tracks, so in ascending tracks we have lateral spinothalamic tracts, anterior spinothalamic tract. This is lateral spinothalamic, this is anterior spinothalamic, and we have fasciculus gracilis, fasciculus cuneatus, posterior spinocerebellar, anterior spinocerebellar, spino-olivary, and spinotectal. So these are the tracks that are ascending tracks. Now if we talk about the anterior spinothalamic tracts, so it is situated at anterior white funiculus and its origin is from chief sensory nucleus of gray posterior horn, and then second order neuron बनाता है cross and enter white commissure, and then it goes to anterior white column of spinal cord of opposite side, as you can see this in diagram. क्रॉस करके एंटीरियर वाइट कॉलम ऑफ स्पाइनल कॉर्ड के अपोजिट में जाके इट टर्मिनेट्स इन वेंट्रल पोस्टेरोलैटरल न्यूक्लियस ऑफ थैलेमस। ये यहाँ पर थैलेमस में पोस्टेरोलैटरल पार्ट में चले गया, एंड देन it sends its impulses to sensory cortex of cerebral part of brain. So its main function is touch and pressure from opposite half of the body. So this is all about anterior spinothalamic tracts. So it is usually in opposite side. So this is the first order neuron, this is the second order neuron, and here it is forming at the third order neuron. उसका मेन जो फंक्शन है वो है टच और प्रेशर सेंसेशन जो अपोजिट साइड ऑफ द बॉडी है उसको लेकर जाना। So if we talk about the thalamus, so this is ventroposterolateral part, यहाँ पर ये anterior spinothalamic tract टर्मिनेट होता है मेनली इन जो उसका सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन है वो यहाँ टर्मिनेट होता है, और ये थैलेमस के पार्ट्स है। Now if we talk about lateral spinothalamic tract, so it is situated at lateral column of spinal cord and its origin is marginal nucleus and substantia gelatinosa. Then it crosses fiber to lateral column of spinal cord, then it goes through medulla, pons and midbrain with anterior spinothalamic tract के साथ में जाता है अपोजिट में क्रॉस करके, and then it goes at lower part of medulla and again it terminates in ventral posterolateral part nucleus of thalamus, and then it goes to cerebral cortex, और इसका मेन फंक्शन होता है पेन एंड टेम्परेचर जो अपोजिट हाफ ऑफ द बॉडी है उसके सेंसेशंस को कैरी करना।
Now if we talk about fasciculus gracilis and fasciculus cuneatus, तो fasciculus gracilis जो है वो sacral lumbar and lower thoracic ganglion of posterior nerve root में है, and fasciculus cuneatus upper thoracic cervical ganglion में है. ये टर्मिनेट होता है आपका मेडुला ऑब्लोंगेटा में. देन सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन जा रहा है, फाइबर क्रॉस होते हैं विद इन मेडुला एंड आर्चिंग कॉन्ट्रालेटरल साइड. Then it goes to pons and midbrain. Then it goes to ventral posterolateral nucleus of thalamus. And then the third order neuron is to the sensory area of cerebral cortex. Now if we talk about spinocerebellar tracts, so this is dorsal or posterior spinocerebellar. ये ट्रैक्ट अनक्रॉस्ड रहते हैं. ये सिचुएटेड रहते हैं लेटरल कॉलम ऑफ स्पाइनल कॉर्ड. देन ओरिजिन होता है डॉर्सल न्यूक्लियस ऑफ क्लार्क. फर्स्ट अपीयर इन अपर लंबर सेगमेंट. देन L3 कैरीज लोअर लंबर लोअर sacral segment. Uncrossed axon from same side neuron reach to the lateral column. Then medulla oblongata cerebral inferior peduncle. Then it goes to cortex of anterior lobe of cerebellum. इसका नाम स्पाइनोसेरिबेलर है, तो ये जो है स्पाइनल कॉर्ड से सेरिबेलम तक जाता है. और इसका फंक्शन होता है अनकॉन्शियस प्रोप्रियोसेप्शन फ्रॉम इंडिविजुअल मसल्स ऑफ लोअर लिम्ब. Then ventral or anterior spinocerebellar tract, that is crossed. These are crossed. Lateral वाला जो है that is uncrossed, and anterior one is crossed. So origin is marginal nucleus in posterior gray horn, then cross midline and ascends to lateral column of spinal cord, then reach cerebellum through superior cerebral peduncle and then terminate in cortex of anterior lobe of cerebellum. इसका फंक्शन भी वही अनकॉन्शियस प्रोप्रियोसेप्शन फ्रॉम लोअर लिम्ब एज होल, सेंसेशंस को कैरी करना. सो ये इसका रूट है. Here is the second order neuron. Now comes the spinotectal. So it is situated at the lateral side of lateral white column, and its origin is chief sensory nucleus, crosses to anterior white commissure and then to the lateral column of spinal cord. Fiber ascends to midbrain and then it goes to superior colliculus to the midbrain. Afferent limb of reflex movement of eyes and head towards source of stimulation. इसका फंक्शन है afferent limb of reflex movement. So now the last one is spino-olivary, that is anterolateral part of white column, and its function is proprioception. So this is all about the ascending tracts.